This is how instruments are made on Jallikoti Lane in India. For over a century, 90% of the country's brass band instruments have come from this small neighborhood in the city of Meerut. And many of the more than 100 small shops still make trumpets, tubas, and bugles mostly by hand. ये बाजा जो है एक ही कारीगर के हाथ का काम नहीं है, अलग ये पार्ट अलग अलग जो होते हैं ये कहीं और बन रहे हैं, तो एक ही बाजे के अंदर बनाने के लिए 15 से 20 कारीगर होते हैं. But with public gatherings limited, the livelihoods of manufacturers and musicians are at stake. ये खतरे के अंदर आने वाला नहीं बल्कि समझ लो आ चुका है सर, क्योंकि हमारे जो 500-700 रुपए हैं हम क्या करेंगे, बस इतना ही है कि हम पेट ही पाल लें अपना. As India struggles to boost an economy crushed by the pandemic, we go beyond the headlines to see how the country's music instrument industry is holding up. Muhammad Samar has been working at Nasir Ali and Company for 9 years. He shows us the basics of how a brass instrument is made. ये चद्दर मुड़ रही है, चद्दर इस तरीके से मुड़ती है, मुड़ने के बाद ये सोल्ड होगी, सोल्ड होने के बाद फिर ये गोलाई होगी. Next, workers create the bell. ये बाजे का आगे का हिस्सा होता है, बाजा छोटा हो या बड़ा बाजा हो, सभी उसके आगे के हिस्से यहाँ बनाते हैं. Craftsmen solder the brass pipes into place with a welding gun that uses a special mixture of silver and copper. Then they pour water into the instrument to make sure that there are no holes. अगर लीकेज होगी तो बाजा साउंड नहीं देगा. At another workshop in Jallikoti, technicians are busy making valves and pistons. तो ये पिस्टन अलग-अलग साइज के होते हैं, एक ही नहीं होते, तो इसलिए इसके ऊपर निशान लगते हैं कि इसका ये पहला पिस्टन है, ये दूसरा पिस्टन है, तीसरा पिस्टन है. The pistons are then soldered on. Next, they dip the entire instrument into a tank with an electric charge and coat it with a thin layer of nickel or silver. The instruments go through one more round of polishing before they are packed and ready for sale. A trumpet made in Jallikoti starts at around 5,000 rupees or $68. That's much cheaper than in the US, where it sells for twice as much. Still, the music equipment industry in India is massive, bringing in $6 million annually. One of the most successful manufacturers is the Rose Band Company, established in 1860. The owner, Azizur Rahman, says a well-made brass instrument is an investment. ये तो ब्रास बैंड तो 20 साल तक चल जाते हैं, कहते हैं उसकी रिपेयरिंग करा देते रहे बैंड वाले और उसका चलता रहता है. Sadly, the industry is lagging behind the times. वही पुराने तरीके इस्तेमाल हो रहे हैं, नया कोई इसके अंदर मटेरियल नहीं आया. Many manufacturers say they can't afford to upgrade their equipment and need financial help. हमारे लिए यही है कि भाई हमारी तरफ गवर्नमेंट का ध्यान हो और हमें गवर्नमेंट सहायता देवे, ज़मीन देवे, तो बाजा तो हम मतलब समझ लो कि हम चाइना से भी बहुत आगे का बना सकते हैं, इंग्लैंड से भी बहुत आगे का बना सकते हैं. Sales have also dropped in recent years because India imposed a 28% tax on musical instruments. This year, manufacturers suffered another blow when business came to a standstill during the pandemic. इस पर तो 100% ही लॉस हुआ है. बिल्कुल कारीगरों को जेब से ही पैसे देने पड़े हैं. कुछ कारीगरों ने दूसरा काम करना शुरू कर दिया. इसको छोड़ करके 90% तो यही हुआ कि कारीगरों ने दूसरा काम शुरू कर दिया. बड़ी परेशानी का आलम आया इस टाइम में, बहुत ज़्यादा. For the first time in over a century, Rose Band Company started selling its products online, all over the world. But most brass instruments are still sold in India to local bands that perform at weddings, funerals, and religious festivals. मजहब का बात बोले तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म ये चारों है और चारों धर्म में इसका मान दिया जाता है. हिंदू है, इसमें बैंड चल रहा है. मुसलमान है, उसमें शहनाई चल रहा है. सिख है, उसमें तबला, हारमोनियम चल रहा है. ईसाई है, उसमें गिटार और पियानो वगैरह ये सब चलता है. 35-year-old Ravi Kumar and his band are getting ready to play at a wedding in Delhi. सीजन के हिसाब से हम लोग आते हैं 10,000 12,000 ऐसे करके, जो जैसा कलाकार है उसको वैसा सैलरी मिलता है. उस हिसाब से हम लोग को सीजन में आके काम करके फिर अपने गांव चले जाते हैं. Today the band has been hired by the groom's family. They play local tunes to entertain guests.
Then the party moves to the wedding hall. By Indian standards, this is a small affair. Many weddings have over 1,000 guests, but the government has banned large gatherings, putting pressure on the $50 billion wedding industry. Musicians like Ravi are now struggling. बैंड के अलावा हम लोगों के पास कोई कलाकारी नहीं है। हम लोगों का घर द्वार, घर परिवार, बाल बच्चा इसी से चलता है, बैंड से ही। But Ravi hopes that traditions like this will outlive the pandemic and that business will be booming once again on Jallikoti Lane.